बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th ऑफलाइन क्लास है फिजिकल एजुकेशन का। जो हमारा टॉपिक था वह है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस। देयर आर 5 कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे which are just like the strength, speed, endurance, flexibility, coordination and agility. इससे पहले हमने वो 4 पढ़े थे and now it is the fifth one, that is the coordination and the agility. वो 4 इससे पहले हमने पढ़े। Coordination and agility means a term that is the ability of the body to perform movements जो होता है with the perfection and with the efficiency, with the effectiveness, etc. The fifth combination means the coordination and agility. Agility जिसको हम बोलते हैं फुर्तीलापन, and coordination means to coordinate with the other components of physical fitness that increase the stamina, strength, that is like that. फिफ्थ कंपोनेंट जो है कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। कोऑर्डिनेशन हम इस चीज को बताएंगे, ये एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की टू परफॉर्म एन individual has to coordinate each and every body part, and individual has to coordinate with each other to perform our movements in a perfect way, in an effective way, so that there will be a proper combination of all elements, all components of physical fitness like strength, speed, endurance, flexibility during movements. Whenever we perform the movements, whenever we perform any activity, we have to coordinate. If there is no coordinate of all components of physical fitness, then there is no physical fitness. If we have the physical fitness में अगर हमारे पास components है, strength है, speed है, endurance है, flexibility है, but if we did not properly combine them, if we did not properly coordinate, if our perfection, our speed did not match up with the strength, if our endurance did not match up with the flexibility, if there is no proper coordination of our agility, of our movements, of our strength, then there is no component of physical fitness. And this component has very much importance in physical education, in physical fitness. Why? Because the coordination of each and every component has a very overall effect, has a very good effect, has a very prospective effect. So that efficiency होती है और perfection in movements हमारे क्या करता है? Efficiency and perfection in our movements coordinates abilities, activities in supports. Efficiency और perfection हमारे movements में because due to the coordination of abilities of our activities of our supports. So simply क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी ऑफ एक्शंस होना चाहिए, रिदम ऑफ एक्शंस होना चाहिए, चेंज ऑफ मूवमेंट्स होनी चाहिए. This all depends upon the coordinating ability. It's almost required for every game. But strength, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जिसको बोलते हैं, ये जनरल स्ट्रेंथ हो या एजिलिटी हो, इन ये सब दीज आर कंसिडर्ड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. द टर्म जो एजिलिटी होता है, मतलब फर्स्ट इट वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड, बट इसको क्या किया गया, नाउ वी कैन फाउंड इट दैट हाउ मच इम्पोर्टेंस द एजिलिटी वर्ड हैज, एजिलिटी हैज. क्योंकि क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटीज और दोज एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसे क्या होता है कि वो इंडिविजुअल कैन डू, मतलब सिंपली वेरियस एक्टिविटीज प्रॉपरली, इफेक्टिवली, एक्यूरेसीली, रिदमली, कॉन्स्टेंटली. दैट इज द कोऑर्डिनेशन. ये एबिलिटीज जो होती है, दीज एबिलिटीज इंक्रीज द जनरल, स्पेसिफिक एंड ब्यूटिफाइज graceful movements of our body. It increases the momentum, flexibility, it increases the strength. That is why the coordination has very much importance in our body. Such types of abilities are much helpful in the physical activities. ये होता है, it corrects the movements, it corrects the movements, it corrects the fitness. Other association component जो होता है, that is the power. Power means the ability to transfer जो हमारी एनर्जी होती है into a force. जैसे कि जो हमारी एनर्जी होता है, we have to convert into a through, discuss through, in a put through, in a something. Cardiorespiratory endurance. Cardiorespiratory endurance means the ability of our lungs, ability of our heart, ability of our blood vessels, respiratory system, and respiratory system to supply the oxygen to the muscles that has the ability that are utilizing it, to allow it
that sustain exercises. को cardiorespiratory endurance ability of the heart, लंग्स, ब्लड वेसल्स की होती है कि वो कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं टू द मसल्स दैट आर यूटिलाइज्ड, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी. हम परसिस्ट कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज फॉर लॉन्गर पीरियड अंडर द काइंड ऑफ स्ट्रेस. वी कैन bear such kind of stress when there is a proper coordination, proper strength of our muscle. Thank you very much.